whenever you are doing self preparation for your exam, books hold the key. अगर अच्छी book मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है. On the other hand, if you get a book which is not conceptually good, which is not helping you understand, you end up wasting a lot of your time and you get frustrated. You almost feel like giving up the preparation of the exam. So from that angle, I am going to discuss in this video is Prasanna Chandra, which is a very famous book, relevant or required for RBI Grade B or not. And before I start, I would request you to subscribe to our YouTube channel and join our Telegram channel, the link for which is given in the description of this video. Now, why are we discussing about Prasanna Chandra? Because if you see the RBI Grade B notification, clearly in the notification, one of the book mentioned is, one of the reference sources mentioned is Financial Management by Prasanna Chandra. And before I start giving my analysis on whether this book is required or relevant for RBI Grade B, I must say that Prasanna Chandra is a very good book. Prasanna Chandra sir is a very good author. And I have personally studied this book. I personally gained from this book when I was doing my MBA Finance. ठीक है, तो वो एक और एंगल है कि फाइनेंस में, एमबीए फाइनेंस में, सीएफएस के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इट इज अ मस्ट डू बुक, इट इज अ ग्रेट बुक. बट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस बुक इन आरबीआई ग्रेड बी? नाउ इफ यू सी द सिलेबस फॉर आरबीआई ग्रेड बी गाइस, इफ यू सी द सिलेबस, primary and secondary markets, risk management, derivatives, financial inclusion, alternate sources of finance, private and social cost benefit, functions of RBI, monetary policy, fiscal policy, inflation. I mean, these are not core topics of finance. On the other hand, if you start reading Prasanna Chandra, you will find that there are certainly core topics of finance like income statement, balance sheet, cash flows, valuation, financing. वो सारे कोर टॉपिक्स है फाइनेंस के. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आई हैव लिस्टेड डाउन द चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन प्रसन्ना चंद्रा बुक. ओके, फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू माइट बी रेलेवेंट फॉर यू, फाइनेंशियल सिस्टम माइट बी रेलेवेंट फॉर यू, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट लीस्ट रेलेवेंट, ratios might be to some extent but not much as in RBI, financial planning and forecasting, valuation तो पूछते ही नहीं है, pricing models, capital budgeting, risk analysis, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. इनमें से सारे चैप्टर्स आर कोर फाइनेंस विच आर required by investment bankers or MBAs or CFAs but not required for RBI Grade B. Try to understand. Your syllabus is very much journalistic. And even if there are some topics here like bonds, like derivatives, वो topics सिर्फ इस book में दिए हैं. It's not necessary that you have to read at this level. Try to understand. अगर आप बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, नाउ डजंट मीन दैट यू हैव टू रीड डेरिवेटिव्स और बॉन्ड्स एट द सेम लेवल व्हिच अ सीएफए और एन एमबीए वुड रीड. दैट इज द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड. आरबीआई इज आस्किंग यू सम वेरी बेसिक, सम वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बहुत बहुत पप्पू भी नहीं है, बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट yet that you start reading the advanced level of all of these concepts. ये समझना बहुत जरूरी है. And once you start reading Prasanna Chandra, it will take you into too much depth that you will forget that you are reading about RBI. You might gain interest also, but that is not relevant to spend so much time on learning something which is not helping you to crack RBI Grade B. तो मैं सिर्फ RBI Grade B के पर्सपेक्टिव से अगर कहूँ, I don't find Prasanna Chandra that relevant, or if I have to be blunt, I would say it is completely irrelevant book when it comes to RBI Grade B. But otherwise, it is a great book. It can help you enhance your knowledge of finance. It can help you understand fundamentals of finance. You must read this book even if you get into RBI later in your life. But अभी अगर आपके पास टाइम कम है, I would not suggest you to go through this book. बिल्कुल भी नहीं करिए. और अगर कुछ करना भी है, बुक ले ली है, पैसे खर्च दिए हैं, तो मे बी यू कैन रीड दिस चैप्टर. फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ लीजिए, बॉन्ड्स के बारे में बेसिक पढ़ लीजिए. दो थ्योरी वुड बी वेरी लिटिल हेयर. ज्यादा वैल्यूएशन पे बात होगी जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं. ऑप्शंस एंड देयर वैल्यूएशन में अगेन बेसिक ऑफ ऑप्शंस पढ़ लीजिए, बट वैल्यूएशन पे मत जाइए. दिस आर वेरी एडवांस कंसेप्ट्स. ठीक है, बुक कहती है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस कहती है, बट ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड बुक्स है, और न्यूमेरिकल एग्जाम में ऑलमोस्ट नील पूछे जाते हैं. सो थ्योरी के नाम पे इसमें बहुत कम है, जस्ट बेसिक्स हैं जो कि सफिशिएंट नहीं है. और इसमें बहुत सारे 90% ऑफ योर सिलेबस इज नॉट एट ऑल कवर्ड इन दिस बुक, राइट? सो जस्ट टू गिव यू द लास्ट मिनट समराइज पर्सपेक्टिव, दिस बुक otherwise is very good but not relevant, not required for RBI Grade B. I hope you will
टेक दिस इनपुट एंड प्लान योर प्रिपरेशन बेटर। अब सर रेलेवेंट बुक कौन सी है वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में जरूर बताऊंगा, कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊंगा, फाइनेंस की भी, मैनेजमेंट की भी। फॉर नाउ आई टेक योर लीव, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।